students, today I am going to teach you all the last poem in your syllabus, Aunt Jennifer's Tiger, dictated by Adrena Rich, and this poem describes the problem of a lady. The whole poem is divided in four parts in 4 lines each. Now I describe the poem. Aunt Jennifer's Tiger. Friends, across a screen. First of all of you consider the theme of this poem. There is a lady, a very old lady, and she is making a tapestry. Tapestry means that very big curtain type cloth, and there is a in art makes in this way, and she is making some trees and the man under these trees, and very near there are the tigers prancing. Prancing means is that jumping. This poem describes the problem of a lady that is overtaken by her own husband. Her husband tortured her so much that even she feels that the wedding ring means that कड़ा जो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी शादी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ग्रूम पार्ट से ब्राइड को गिफ्ट की जाती हैं। उसमें कुछ रिंग्स होती हैं, वेडिंग बैंड्स होते हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसको इतना टॉर्चर करा है कि एक हल्का सा वो वेडिंग बैंड पहने हैं, कड़ा पहने हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा वो हैवी फील कर रही है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी कभी अगर कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और टॉर्चर करते करते क्या होता है कि हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन सारोस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम अपनी उस इरिटेशन को, उस चिढ़ को किसी न किसी के जरिए से निकालते हैं। इन द सेम वे इट इज बीइंग हैपन बाय Aunt Jennifer. So she is making tigers and she calls those tigers her own children, and you know all very well that tigers represent cavalry, bravery and courage. टाइगर्स जो होते हैं कभी डरते नहीं हैं, and she also has dictated the man. What is the relation between the tigers and the man? That Aunt Jennifer always in her whole life was fearful by man, but after making this tapestry she wants to describe that her own children will never fear from the man. कि मैं जो हूँ जिंदगी भर इंसानों से डरती रही, अपने हस्बैंड से डरती रही, लेकिन जो मेरे बच्चे जो क्रिएशन है, जो टाइगर्स हैं, वो कभी भी इंसानों से नहीं डरेंगे। तो वो सिर्फ इस टेपेस्ट्री के जरिए से वो अपनी इरिटेशन को शो करना चाहती है, बताना चाहती है। नाउ आई स्टार्ट द पॉइंट। Aunt Jennifer's tiger prays across a screen. Prays means is that jumping, कूदना। तो in this scenery, the tigers are prancing, the tigers are jumping. Bright topaz, you know well, the color of skin of the tigers are very bright. Just like a topaz. Topaz means that एक चमकीला पत्थर होता है। तो bright topaz, dangerous of a bird of green. The word dangerous has been created by the Dan. Dan you know well. D-E-N. Dan means that cave. छोटे छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा
शेर जो है, टाइगर्स जो है वो केव में रहते हैं। तो वही है कि हमें कि ब्राइट टोपाज डेंजियंस of a world of green, and all of you will find these tigers in the woodland, in the woods. जंगलों में आपको ये टाइगर्स मिलते हैं। They do not fear the man beneath the tree. In this line, Aunt Jennifer wants to describe that it would never be happen, just like her, that she always fearful. She was so much fearful by the man, by her own husband too, but it would never be happen with the tigers. These tigers would never be fearful from the man. They face in sleep cavalry certainty. Certainty means that निश्चितता, and cavalry means बहादुरी से, courageous, and sleep means that very fastly. So in the last line, Aunt Jennifer wants to describe that these tigers would play in the woodland without fear of the man. Now I proceed to the second para. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. Aunt Jennifer, she is making the tapestry. So her fingers are vibrating in this way. Okay, there are so many reasons. That first of all, she has been old, so her fingers are fluttering. Second is that she has been tortured too much by her own husband, and the third last reason is that she is making a tapestry, एक scenery बना रही है। Always remember that she is not making a shelter, pullover, but she is making a tapestry. Find even the ivory needle hard to pull. Ivory pure white, needle means that वैसे सुई होती है, लेकिन needle means is सलाइयाँ very long, स्वेटर बुनने के काम में आती है, इस तरह से ऐसे स्टिचेस करने वाली होती हैं। Then you know well that the weight of the needles are very light, बहुत हल्की होती हैं सलाइयाँ। Even though she has been tortured so much that she is feeling to operating those needles very hardworking, बहुत ही मुश्किल से उन सलाइयों को वो चला पा रही है। The massive weight of uncle's wedding band. In the beginning, I told you all that she is feeling the weight of the band too much because she has been tortured very much by her own husband. Marriage, you know well. Marriage, the word marriage has been created by marry, खुश। आप जानते हैं जब किसी की शादी होती है तो कोई भी इंसान बहुत खुश होता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, और कुछ गिफ्ट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं वो साइड से, वेदर ग्रूम और ब्राइडग्रूम। At the time when we wear those gifts, we feel so much happy. But here is just supposed that why those bangle, why those simply we can say कड़ा, ये जो बैंड है, उस बैंड के जरिए से Aunt Jennifer happy feel नहीं कर रही है। She is feeling that band is a weight, that band is a burden for her, that made her life a curse and hellish. एक नरकीय जिंदगी उसने अपने हस्बैंड के साथ बताई, इसलिए उस जो बैटिंग बैंड है उसको वियर अप करने में वो सिर्फ उसको कैरी कर रही है, लेकिन हैप्पीली नहीं कर रही है, वो सिर्फ ढो रही है उसको उन रिश्तों को वो कैरी आउट कर रही है, बट शी इज नॉट हैप्पी बाय हर ओन मैरिज। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. She is not wearing that
she would run away more and more her relation with her own husband, but this wedding band has been imposed to her to run away her marriage life. Here is a question for all of you that one day in a last year one student asked me, sir, जब उसका हस्बैंड उसको इतना टॉर्चर करता था तो आंट जेनिफर ने उसको छोड़ा क्यों नहीं? Then for that students there was my answer that it might also be happen कि हो सकता है उसका हस्बैंड उसको लाइक ना करता हो, लेकिन आंट जेनिफर उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हो, जिसकी वजह से आंट जेनिफर उसके टॉर्चर को, उसकी रूडनेस को सहती रही और कभी भी उसने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा। बट उसका जो हस्बैंड था वो हमेशा उसको परेशान करता रहा और उसकी जिंदगी को बहुत ही नरकीय बना दिया। Still ring. Now, when aunt is dead, her terrified hands will lie. All we know very well that it is a death that ends all the sufferings, all the sorrows. So the poet Adrienne Rich also describes that when Aunt Jennifer will die, that all her sufferings, all her sorrows would be end up. But still ring with audience, she was mastered by. There are some relations, there are some foundations which never end up after our death. So the poet also says that it is also fact that Aunt Jennifer would die, but the ring, the relations, the foundations would never be end up to her. The last two lines of this poem are quite different. In these two lines, the poet wants to describe, simply we can say that it is in a happy ending. The tigers in panel means is that this is scene, this is scene. The tigers in the panel that she made मतलब जो आंट जेनिफर ने इस पैनल को बनाया, सीनरी को बनाया, और सीनरी में ये टाइगर्स बनाए, वुड्स बनाए, मतलब ये पूरा जंगल बनाया, ठीक है जी, और ये मैन बनाए। This panel, this scenery will remain after the death of Aunt Jennifer and her children. Her children means that tigers will go on prancing, proud and unafraid. These tigers would never be fearful from the man. They always prance before the man without fear. There would not be a less fear in the mind of the tigers for the man that there are powerful men before them. So, my dear friends, Aunt Jennifer इस टेपेस्ट्री को बनाने का मेन इंटेंशन ये था कि जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में बिताई, मेरे बच्चे कभी भी परेशान नहीं होंगे, मेरे बच्चे कभी भी जो द वर्ड ऑफ मैन है उनसे डरेंगे नहीं। बिल्कुल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी के फादर इलिटरेट है,
अनपढ़ है, तो वो उनका इंटेंशन ये होता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊं, लिटरेट बनाऊं, और जो परेशानियां मैंने जीवन में अशिक्षा की वजह से फेस की हैं, वो परेशानियां मेरे बच्चे कभी भी फेस ना करें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।